Okay. Uh, Good morning, good afternoon, rather. Uh, in today's class, we will be talking about Delhi during the 18th century, and at least that is what the title says. But we will be looking at the longer history of the development of the culture of Delhi. In the last few classes of this course, we have been talking about various cities of Delhi which were established right from the beginning of the second millennium. We began talking this about Indraprat, and after Indraprat, we spoke about Lal Kot, and we spoke about Kila Rai Pithoda. We spoke about the Qutub Delhi, which was the Sheher, and from there on, we have spoken about Siri, we have spoken about the Jahapana, which uh, Muhammad bin Tughlaq wanted to construct, and after that we moved on to the Mughal Delhi, and we moved on to the time period wherein this capital city was constructed by Shah Jahan, the construction of Shah Jahanabad and the construction of Kila Mubarak, which we know as the Lal Kila. तो लाल किले के कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसको उस समय पर किला मुबारक कहा जाता था, और इसी के साथ साथ शाहजहानाबाद के कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, एंड वी दैट वाज द लास्ट क्लास दैट वी हैड. A very important thing during the time of Shah Jahan was the development of Shah Jahanabad or Delhi as the center of culture, as a center of culture, as a center of literature, as a center of where this entire nobility, the Mughal nobility, with the extreme kinds of riches that they had, huge sums of money, and extremely rich people who made Delhi their house, and Delhi became the center where all these people would be living. So Shahjahanabad, in that sense, was not just the moving of the capital from Agra to Delhi. When a capital of an empire moves, along with it moves the coterie, the entire people who make the court, who made the Mughal court, be it the nobles, be it the courtesans, be it uh, you know. the chefs, the jewelers, all those people who had catered to the Mughal court. And also because, as I said, while we were talking about Shahjahanabad, I did mention the fact that how there were these places which are allotted to bigger zamindar, bigger nobles and mansabdars, and also to the princes to make their own houses. So it was not just the Kila Mubarak which was constructed in Delhi. Also, what was constructed in Shahjahanabad, there were these piece of land, which were demarcated that this is the land which is allotted to this particular noble, and he can come up with his own palace or his own haveli on this land. So the king is moving, the king's family is moving, the elaborate, the army is moving, the personal guards are moving, the all the begums and the agas, all the wives, etc. Everybody is moving to Delhi, and along with them, what is also moving is the nobility, and along with the nobility, what also moved were the classes who would cater to these top classes. So people like jewelers, people like the singers, the poets, people who would perform in the Mughal court, etc. Now. 18th century, and rather 17th century, during the time of Aurangzeb itself, a lot of changes come. So it is not that the patronage which is provided to these dancers and singers remains the same across the various emperors who come to power, and once they leave. So they keep on coming in, and so with every successive emperor who comes to power, there is a change in the kind of patronage which is given to these
courtesans, given to these painters, given to these architects, because not every emperor is going to be enthusiastic about the art of painting or the art of literature or the art of singing or the art of architecture to the same extent as the previous one or as any other one. So there are these changes which come, like, you know, one of the commonly held idea and fact rather is that Aurangzeb was not very supportive of music, and you know, he was not very supportive of paintings also, etc., etc. So we are going to try and look at that also. But where I begin, and you know where your SL material also begins, is to look at a kind of longish history of the you know, of Delhi as the center of culture, of Delhi as a center of art. So if we look at the time period of Iltutmish, if we look at, you know, we move back to that time period, because that is he was in some sense, Iltutmish was the establisher of the founder of Delhi Sultanate. Though he was not the first ruler, but he's the one who you know, who really founded the Delhi Sultanate. Under Iltutmish, there was Delhi developed to a very, very great extent, and this is something that I have been emphasizing even in previous classes. पिछली क्लासेस में भी हमने इसकी बात की है कि कैसे जो शहर था, दिल्ली को सिर्फ शहर कहा जाता था, you know. So the anybody, so if you were in Agra, if you were in Lahore, if you were in Bengal, and if somebody said that, you know, कहाँ जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं, so that meant दिल्ली जा रहे हैं. So ये जो दिल्ली था, दिल्ली की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी एज द कैपिटल. उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस थी एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा उसकी इम्पोर्टेंस थी. और इल्तुतमिश के टाइम पे स्पेशली, यू नो, दैट इज अ टाइम वेयर इन दिस शहर इज एस्टैब्लिश. तो ये जो शहर है एस्टैब्लिश है इल्तुतमिश के समय पर हो रहा है, और उसमें बहुत बड़ा जो रोल रहा वो हमने बात की थी जब हम उसमें बात कर रहे थे कि कैसे जो है मंगोल्स जो है वो सेंट्रल एशिया पे अटैक कर रहे हैं, और बहुत सारे जो पेंटर्स आर्टिस्ट है, क्योंकि वहाँ की सिटीज डिस्ट्रॉय हो रही थी, तो वो दिल्ली का रुख कर रहे थे. एंड यू नो, इल्तुतमिश अलाउड all these people, not just allowed all these people to come and settle here, but in fact gave them patronage. And you know, many of these people who were trained painters and artisans, etc., they came and settled in Delhi, and they found an atmosphere in Delhi wherein they could work, they could find employment, and wherein they were safe first of all, and they could find employment, etc. So इल्तुतमिश के दौरान जो ये दिल्ली सल्तनत का जो समय काल है, जब ये जो शहर है जब वो बसा, the Qutb Delhi, when it was established, this Qutb Delhi was extremely you know, had a multicultural aspect to it, because as I said, there were people from different parts of India also coming to Delhi into this शहर, to Qutb Delhi, in search of employment. And there were people who were coming from various parts of Central Asia. They were migrating to Delhi, one, to seek refuge against, you know, to seek refuge from the Mongol attack within their wherever these people were coming from, and also to find employment. So कुतुब दिल्ली जो थी, इल्तुतमिश की जो दिल्ली थी, वो बहुत ही ज्यादा कल्चरली जो थी वो उसमें मल्टी कल्चरल एलिमेंट ज्यादा था, और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो है वो खुरासन का या ईरान का या ईरानियन ट्रेडिशन का देखने को मिलता है. सो देयर इज दिस राइज ऑफ पर्शियन which we see right from this time, you know, the rise of Persian from the time of Iltutmish, and ultimately, definitely, you know, by the time the Mughals come, Persian becomes the state language, and Persian का जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज होने लगता है. पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पर्शियन बन जाती है. सारे रिकॉर्ड, सारे जो क्रॉनिकल्स हैं वो पर्शियन भाषा में लिखे जाएंगे. सो उससे पहले इल्तुतमिश के टाइम से ही जो बहुत ज्यादा जो है खुरासन का इन्फ्लुएंस रहा, और दिल्ली जो था वो मिडिवल टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा शहर कहा गया. उस समय के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हैं, चाहे वो मिनहाजुल सिराज हो, चाहे वो जियाउद्दीन बरनी हो, उन सब ने ये बात कही कि कैसे दिल्ली जो है वो एक बहुत बड़ा शहर है,
and in terms of area also, not just that it was in terms of population, but even in terms of area, Delhi was quite big. Um, and people like Barni, they compare it to Cairo and they compare it to Baghdad. तो उस समय की जो बाकी की जो बड़ी बड़ी सिटीज थी वर्ल्ड की, कायरो इजिप्ट में था, बगदाद इराक में था, तो उनसे दिल्ली का कंपैरिजन किया गया कि कैसे दिल्ली जो है वो इतनी बड़ी है, जेरूसलम से दिल्ली का कंपैरिजन किया गया, एटसेट्रा. सो this is how this शहर was during the time period of इल्तुतमिश. और उस समय के अगर हम आर्ट की बात करें, म्यूजिक की बात करें और कल्चर की बात करें, तो एक this is only to give us a sense of history that what kind of because we are dealing with the time period of 18th century, but to understand where did Delhi stand in the previous centuries before the 18th century. तो 18वीं शताब्दी से पहले जो है वो दिल्ली किस प्रकार की दिल्ली थी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो जो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट है उसका वो बहुत ज्यादा डेवलप किया. देयर वर दीज वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स लाइक अमीर खुसरो, लाइक अमीर हसन सिद्दी, जिनके बारे में हमने पहले बात करी है. तो ये इस तरीके के जो नाम थे ये दिल्ली के साथ ऑलमोस्ट they were very very important both. For somebody like Amir Khusro, he was very important both in the in as far as the imperial court was concerned, as far as the court of the Khiljis was concerned. And Amir Khusro also played an important role. He was also one of the great disciples of Nizamuddin Aulia. So एक जो चिश्ती ट्रेडिशन है जो डेवलप हुआ दिल्ली में, सूफिज्म जो है, स्पेशली जो चिश्ती सिलसिला है, वो बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर डेवलप करता है. और उसका दिल्ली के कल्चर में in the development of Delhi's culture, a very very important role is that of the Chishti silsila. और वो जो है उसका भी एक लॉन्गर हिस्ट्री है. जैसे सुहरावर्दी जो सिलसिला था, जो जो मुल्तान में they adapted the local language and they adopted practices in which people from all faiths could come. and निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने, जब हम तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तब हमने निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात करी थी, that how he kind of curses the Tughlaqabad fort and he says that यहाँ रहे उजाड़ यहाँ बसे गुजर. तो उस तरह की बात जो की, तो निजामुद्दीन औलिया जो है उनका जो खानका है, उनका जो हॉस्पाइस है, व्हाट इज द खानका, जहाँ पर सूफी सेंट जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं अपने आप को, और उनके जो डिसाइपल्स हैं वो वहां पर आएंगे, उनसे मिलने के लिए आएंगे, और जो वहां पर सेरेमनीज होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे. और जब मंगोल इन्वेजन हुआ दिल्ली के अंदर, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इनकी दरगाह पर पहुंचे. मोइनुद्दीन चिश्ती की भी दरगाह पर अजमेर गए. सो दिस डेवलपमेंट ऑफ द चिश्ती सिलसिला, जो निजामुद्दीन औलिया है, उनका दिल्ली के कल्चर के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. और क्यों था? क्योंकि उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में अपनी बात कही. जो दिल्ली के आसपास की जो भाषा थी, कहाँ पर था ये, जो हमने घियासपुर का जो एक सबब पढ़ा था, हमने पढ़ा था शहर, फिर एक नया शहर, शहर शहर नऊ जो किलोखरी था, और इसके पास में ही घियासपुर जो हमने पढ़ा था, वहां पर निजामुद्दीन औलिया की जो है वो दरगाह इस्टेब्लिश होती है. उनकी जो खानका है, नॉट द दरगाह, दैट इज वेयर द दरगाह इज नाउ. तो निजामुद्दीन औलिया की जो खानका है वो वहां पर एस्टेब्लिश होती है. और वहां पर द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक ऑल्सो टेक्स प्लेस. जो एक सूफी जो समा का जो कॉन्सेप्ट है, और कि जो जब जिक्र किया जाएगा, जब खुदा का जिक्र किया जाएगा, तो उसमें जो समा बांधने का जो कॉन्सेप्ट है, जो कव्वाली का जो कॉन्सेप्ट है, कि समा बांधना मींस बेसिकली रीचिंग दैट स्टेज ऑफ एक्सटेसी विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा. एंड कव्वाली जो है उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट जो है सब्सिक्वेंटली इन द 14th इन द 15th इन द 17th सेंचुरी हमें जो है वो देखने को मिलता है. So very very important. So Delhi has had a very rich history of
these traditions, which it was inheriting from the time period of the Nizamuddin Aulia itself. और जैसा मैंने बात की कि यहाँ पर अमीर खुसरो जैसे, अमीर हसन सिद्दी जैसे जो हैं, वो इम्पोर्टेंट पोएट्स भी रहे जिन्होंने अपनी कॉम्पोजिशंस बनाई एटसेट्रा. अगर दिस इज अबाउट literacy, please don't message me in the middle of the class, because फिर वो Microsoft Teams पे मैसेज पॉप अप होते रहते हैं. ओके, तो अगर हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि यही वो टाइम है जब डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है हमें देखने को मिलता है. ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है हमें अलग अलग भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलता है. अगर हम विजयनगर का आर्किटेक्चर स्टडी करें जो कि डेक्कन में एक एस्टैब्लिश हुआ था, वहां पर भी हमें इंडो इस्लामिक देखने को मिलता है. बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो कि जो इंडो इस्लामिक जो ट्रेडिशन है वो इसी समय से जो है जो दिल्ली सल्तनत के समय से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द हिंदू एलिमेंट्स एंड the Muslim elements, the Islamic elements in architecture. So even in the construction of things like, so जैसे Hindu architecture में आप there could be humans which could be used, and human forms and animal forms etc. could be used. But in Islam, because this was prohibited, making any kind of of a living being in art was not appreciated. So we see that there is a development of very very calligraphic motifs in which Arabic would be written on stone. It would be inlaid on stone, and Qutub Minar is a very very fine example of this kind of architecture, जिसमें वो है Arabic में वो आयतें लिखी हुई हैं कुरान की. तो इस तरीके का आर्किटेक्चर जो कि दोनों को मिला के और हिंदू आर्किटेक्चर ऐसा था जिसमें वो बीम और पिलर्स जो हैं कि पिलर्स एंड देन सपोर्टिंग अ बीम ऑन टॉप. सो इस तरीके का आर्किटेक्चर होता था. इस्लामिक आर्किटेक्चर वाज मोर बेस्ड ऑन आर्चेस. तो इन दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिला इन द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत का जो आर्किटेक्चर है, जिसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहेंगे. और इसके अंदर बाद में बहुत सारे जो है अडेप्टेशंस भी हुई, जैसे कुतुब मीनार का जब कंस्ट्रक्शन होता है, उसके आसपास के जो एरियाज का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें बहुत ज्यादा नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द स्टाइल या जो आर्किटेक्चर है सिर्फ उसी के अंदर इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता, बल्कि एक्चुअली में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो कई सारे हिंदू और जैन मंदिरों का मटेरियल जो है उसको दोबारा यूज करके वहां के कॉम्प्लेक्स का कंस्ट्रक्शन करवाया जाता है. सो दिस इज हाउ the older traditions were being incorporated, not just in time in style, but also इन टर्म्स ऑफ मटेरियल. जो मटेरियल यूज किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके अंदर भी जो पहले का जो हिंदू मंदिरों का या जो जैन मंदिरों का जो मटेरियल है उसको यूज किया जा रहा है. तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, म्यूजिक की हमने बात की कि कैसे म्यूजिक का भी डेवलपमेंट होता है. पेंटिंग जो है, पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ इस दौरान. उतना ज्यादा नहीं हो. जब हम मुगल टाइम पीरियड तक आएंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट होता है पेंटिंग का, स्पेशली अमंग स्पेसिफिक मुगल एम्परर्स. हुमायूं के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है, जहांगीर के टाइम पे तो काफी ज्यादा होता है. सो द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑल्सो डेवलप्ड, बट दीज मेन थिंग्स लाइक आर्किटेक्चर का इतना ज्यादा डेवलपमेंट, कल्चर का. और दिल्ली जो है, जैसा हमने एक बात जो मैं बार बार दोहरा रहा था इन द नंबर ऑफ लेक्चर्स दैट वी हैव हैड, दैट डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटी, डिस्पाइट द कंस्ट्रक्शन of various other of तुगलकाबाद, जो शहर था उसकी इंपॉर्टेंस बनी रही. उस शहर की इंपॉर्टेंस, जो शहर से मतलब है कुतुब दिल्ली का, सो कुतुब दिल्ली की जो है इंपॉर्टेंस वो बनी रहती है इन द आइडिया, एक आइडिया. और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा कॉमर्स के लिए और ट्रेड के लिए. जब
फिरोज शाह तुगलक जो है, जब वो फिरोजाबाद बनाते हैं, जो कि वो इस अरावली रेंज से बहुत दूर हटकर वो नॉर्थ की साइड में रिज के पास वो बनाते हैं, और वहां पर वो दैट इज द कैपिटल व्हिच मूव्स फार बियॉन्ड दिस स्पेस ऑफ साउथ दिल्ली, क्योंकि उसके अलावा जो सीरी का कंस्ट्रक्शन हुआ, और कुतुब दिल्ली का और तुगलकाबाद का, ये सब साउथ ईस्ट दिल्ली की ही बात थी। तो जब फिरोजाबाद जो है वो थोड़ा नॉर्थ की तरफ हो गया, विच इज प्रेजेंट जी, जो आपका फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है वहां का जो है, सो इट वाज वे फार, एंड दैट इज द टाइम वेयर इन दिस, ये जो शहर है ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और उसमें एक नई लाइफ उसको मिलती है जब शाहजहां जो है, जब वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कैपिटल को दोबारा जो है आगरा से दिल्ली में मूव करेंगे, और जो दिल्ली का जो कंस्ट्रक्शन शुरू होता है शाहजहानाबाद का बिटवीन 1639 टू 1648, जो दिल्ली का शाहजहानाबाद का कंस्ट्रक्शन चलता है, रेड फोर्ट का कंस्ट्रक्शन 9 साल तक चलता रहता है। तो वो एक आइडिया की शहर जो है वो लोगों के दिमाग में अभी भी जो दिल्ली था, दैट वाज द सीट ऑफ पावर, एंड that in that in a way can be one of the possible explanations why Shah Jahan decides to move his capital back to Delhi. Now the time period that we are talking about, the um, so I'll be giving you some bit of more information about development of architecture under the Mughals, development of music under the Mughals, development of painting under the Mughals, and kind of tracing the history of that as well. But a very important thing for us is to keep in mind कि ये जो सारे जो the different emperors who will be coming to Delhi are going to provide different kind of patronage to the people who are going to be here. और कल्चर के डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल रहता है वो रूलर का या एम्परर का रहता है, कि अगर जो एम्परर, जैसे हमने बात कर रहे थे जब हम दिल्ली सल्तनत की, तो हमने बात की कि कैसे जो इल्तुतमिश है, ही गेव द काइंड ऑफ पेट्रनेज टू ऑल दीज पेंटर्स एंड म्यूजिशियंस एंड people from different backgrounds in literature. When they were coming to Delhi, they were housed in Delhi. So इल्तुतमिश ने एक उस तरीके का पेट्रनेज दिया, तो दिल्ली जो है उस तरीके से डेवलप कर पाया। तो क्या उसी तरीका का पेट्रोनेज मुगल रूलर्स भी देते हैं, और क्या हर मुगल रूलर उसी तरीके का पेट्रोनेज देता है, एंड नहीं देता है तो क्या डेवलपमेंट हो पाता है दिल्ली के कल्चर का, एंड इफ द डेवलपमेंट हैपेंस इवन विदाउट the patronage given by the Mughal emperor, then how does this development happens? So we are going to talk about that as well. Now, one thing which I forgot to mention is that questions in the Q&A section. अगर कोई सवाल हो तो आप Q&A section में पूछ सकते हैं. I'll come to your questions towards the end of the session. One thing which I know is that we have missed a class on the culture of शाहजहानाबाद. जो शाहजहानाबाद या जो दिल्ली का जो कल्चर है 17th सेंचुरी का, जो शाहजहानाबाद जो है किला मुबारक जो है, द ऑस्पिशियस फोर्ट, उसके कंस्ट्रक्शन के बाद जो शुरू होता है, बेसिकली द टाइम पीरियड ऑफ 17th century is something that we haven't really covered in our class. We missed that class, so we'll try to get back to that. And so questions in the Q&A section, and I'll come to those at the end of the session. 1 minute break. I'll have a sip of water, and then I'll continue, talking about the Mughal Delhi. Other than Amir Khusro, it was Amir Hassan Sijzi. अमीर हसन सिद्दी, जिनके बारे में हमने पहले भी बात की थी, जो कि आर्मी मिलिट्री में थे, और वो सिरी में रहते थे। सिरी जो कैपिटल है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, वहां पर रहते थे। ही इज वन ऑफ द पर्सन्स हु इज वेरी who writes the biography of निजामुद्दीन औलिया जो है, उनकी बायोग्राफी लिखते हैं सिद्दी. So yeah, that is the other name. One name is Amir Khusro and the other name is Amir Hassan Sidzi. Any other question? बच्चे, मेरे पास पेपर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होगी,
एस वेल वेबसाइट पे शायद डेट शीट आ गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। आई होप सारे ही कोर्सेज की आ गई हो, बट डू चेक द SOL and DU website. I believe that the date sheet has been brought out. Uh, so just that. Okay. So I was talking about, the various. I was talking about the fact that how does Delhi develop, during the 18th century और 17th century में किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके बारे में मैं बात कर रहा था। और the ruler, okay, Aurangzeb coming to power. Okay, let's, before that talk about, continue with the same kind of the story जो development हो रहा था इंडो हमने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होता है, लिटरेचर का डेवलपमेंट होता है, कल्चर का डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को मिलता है इन जो पर्शियन जो है उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। एंड स्पेशली व्हेन द मुगल्स कम टू पावर, जो पर्शियन है जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाता है, पर्शियन को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द मुगल्स। एंड फ्रॉम दिस long history of the importance of the growing importance of Persian, we are going to move to a time period in the 18th century wherein there is development of Urdu. उर्दू का जो है डेवलपमेंट, उर्दू लिटरेरी कल्चर का जो डेवलपमेंट है वो दिल्ली में होना शुरू होता है। जो इम्पोर्टेंट नाम है मीर तकी मीर जैसे जो है वो दिल्ली में आते हैं। दिल्ली के जो लिटरेरी कल्चर है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट नाम है मीर तकी मीर एटसेट्रा। और उनसे पहले बेदिल हैं, और उनके बाद जो है वो 19th सेंचुरी में गालिब और दाग दहलवी जैसे जो लोग हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इन द डेवलपमेंट ऑफ द उर्दू लिटरेरी कल्चर इन दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो कैसे पर्शियन से एक उर्दू की तरफ वो बढ़ता है। एंड द राइज ऑफ उर्दू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इन फैक्ट अ सेपरेट टॉपिक in your course material. And so development of Urdu is very interesting, and how Urdu reaches that prominence, which is wherein it is uh, you know um, uh, it is appreciated far greater than the Braj Bhasha and even more than the Persian. So Urdu ka development, or though Persian remains important, Persian remains the language of administration of the Mughal court right till the end of the Mughal Empire. Even in fact, when the Sikh Empire is established, जब Sikh rule establish होता है, तो वहां पर भी Persian ही है, जो फारसी भाषा है वही जो है उसको यूज किया जाता है as language of administration. बट डिस्पाइट दैट जो 18th सेंचुरी है उसमें उर्दू का डेवलपमेंट, उर्दू लिटरेरी कल्चर का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और आर्टिस्ट जो हैं, पेंटर्स जो हैं, एक अलग तरीके का डेवलपमेंट वहां देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी जो आर्किटेक्चर है जिसमें आपका जो सफदरजंग टूम जो है, और वो दैट आल्सो डेवलप्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। Okay, uh, I will get back to the questions. I can see that some of you are raising questions here, so I'll get back to these questions towards the end. So, Abhi, let us continue with the same. Let us go back to this, the time period that we are trying to reach in the 18th century. So, 1658 is when when Aurangzeb comes to power. I'm kind of taking you back in the 17th century. 1658 is when Aurangzeb comes to power, और 1679 के आसपास जो है वो औरंगजेब दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं। पहले वो राजस्थान की तरफ जाते हैं, because Aurangzeb is fighting a lot of wars, though he is one of the longest reigning rulers, emperors of Mughal India, और
both Akbar and Aurangzeb ruled for almost the same kind of time, but Aurangzeb is fighting a number of wars. Not that Akbar was not, even Akbar was fighting a number of wars, but Aurangzeb stays away from the capital. So though शाहजहानाबाद जो है, जो दिल्ली जो है वो capital थी, but औरंगजेब जो है वो दिल्ली के अंदर ज्यादा टाइम तक नहीं रुकते हैं. He goes away in 1679. He moves to Rajasthan, fighting the fighting number of battles there, and ultimately he goes on to the Deccan part of India. वहां पर जो है वो बहुत ज्यादा battles जो है वो लड़ रहे हैं. He is trying to conquer different regional powers of the Deccan, and that is where he ultimately dies. तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है. And the subsequent emperor who comes to power, the बहादुर शाह जो आते हैं, वो he moves, he stays in Deccan for some time, and then moves to Lahore. और फिर लाहौर जो है वो कैपिटल रहती है. और बहादुर शाह जो है, जो औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्परर बनते हैं, he dies in लाहौर. और सो जो दिल्ली है वो बेशक इट वाज द दारुल खलीफा जो है, कि ये सीट ऑफ पावर ये है, जो एम्परर का घर ये है, पर यहाँ पर एम्परर रह नहीं रहे थे. औरंगजेब के समय से 1679 से दिल्ली वाज इन अ वे emperorless without a ruler for a very very long time, for almost like for 20 and almost like 33, 34, 35 years, Delhi was without the rule of an emperor. तो कोई जो शासक है वो दिल्ली पर, दिल्ली जो था वो बेशक कैपिटल था, इंपीरियल कैपिटल था, यहाँ पर the seat of power was here, but the emperor himself was not living in the capital. They were always out, both in the case of Aurangzeb, who goes to Deccan and fights a number of battles there, and even subsequently Bahadur Shah जो है वो जो लाहौर में जाएंगे, वहां पर he is fighting battles there, and I mean he is based in Lahore. तो and ultimately it is Jahandar Shah जो हैं वो दिल्ली आते हैं. Jahandar Shah is the Mughal emperor who comes back to Delhi, and a lot of development in the 18th century, the development of Delhi culture, and the music and the architecture जो 18वीं शताब्दी का है, वो मोहम्मद शाह के अंडर होता है. सो जहांदर शाह, सो 18वीं शताब्दी ऐसी है जिसमें बहुत सारे जो हैं मुगल rulers, one after the other, they're coming in quick succession, and they're also termed as later Mughals by a number of so some scholars they choose to call them later Mughals, क्योंकि उनसे पहले के जो हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, and Jahangir and Shah Jahan and Aurangzeb. So these all ruled for a very long number of years, and there are specific, the rule of each ruler is specifically move towards strengthening the empire, consolidating the empire, expanding the empire, etc. But after the death of Aurangzeb, we see that their Mughal rulers come and go in quick succession. So one ruler comes and goes after a few years, and then the next one comes. So basically, that strength was not there during the 18th century. So very, very important for us to keep in mind that the century in which Delhi develops as the culture of Delhi develops phenomenally, the culture of the Urdu culture, the architecture, etc. So jo development ho raha hai, that is during the time period of the when the Mughal Empire, when the golden phase, the golden era of the Mughal Empire has declined. So the Mughals are not really as strong as they were in the previous centuries. So this is the time wherein ये एक ऐसा भी समय था जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद number of these painters and writers, etc., they started migrating to different places. They started going to places like Banaras, they started going to places like Kabul, to Lahore, etc. And despite that, we see that in the 18th century, even though the Mughal rule is not very, very strong, the Mughal emperors are not strong, there is a development of smaller states, and there is a development of smaller kingdoms in different parts. So the Awadh comes up, and Bengal comes up, and
the Kingdom of Bengal, the Nawab of Awadh and the Nizams of Hyderabad. तो ये अलग अलग जो है regional powers जो हैं बढ़ रही हैं. And 18th century was a very very important time period even for the development of these vernacular languages and the cultures, the Bengali culture, the Hyderabadi culture, the Awadhi culture. तो इन cultures के development के लिए 18th century बहुत important time period है. और इसी सेंस में दिल्ली के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर of Delhi is happening despite the fact that there are no strong rulers, but a kind of reinvention of Delhi happens during the time period of Muhammad Shah. एक दोबारा से एक बूस्ट मिलता है दिल्ली के कल्चर को. दिल्ली में का जो डेवलपमेंट है दिल्ली में आर्ट का, उसको दोबारा से एक बूस्ट मिलता है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह. एंड again, what were the kind of things that these people were inheriting? So हमने बात की कि जैसे I was telling you कि उन्होंने they had inherited a very very strong culture of qawwali, of music from the Nizamuddin Aulia and the Khanka or the hospice of the Sufi saint. And there is development, the growing development of Persian जो है उसका बहुत ज़्यादा development जो है वो होता है मुगल्स के अंदर, जब not just the state accounts, जो state chronicles हैं सिर्फ वही पर्शियन में नहीं लिखे जाएंगे, बल्कि उनके अलावा जो literary चीजें हैं वो भी पर्शियन भाषा में लिखी जाएंगे. जो literary accounts हैं वो भी पर्शियन भाषा में लिखे जाएंगे. So Persian is in a way developing, and with the decline of the Mughal Empire, जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो पर्शियन का भी डिक्लाइन एक सेंस में देखने को मिलता है, because the mighty empire is declining, the regional states are coming up. And so Persian, though there were a number of people who continued to learn Persian, continued to have the same kind of respect, it continued to be the language of for the state administration, but it in a way lost that that prestige of and there is this development of Urdu. And before that, while we were talking about the Delhi, the establishment of the Sultanate, etc., तो उस समय पर भी जब ये नई भाषा आ रही थी, जब Persian जो थी, which was new for the people of this tradition, we have उस समय के जो आर्टिस्ट हैं, अब जो हिंदू आर्टिस्ट हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे से अडेप्ट किया टू द to this Persian language, and to the Iranian forms of presentation, to the Iranian forms of music, to the Iranian forms of literary genre जो था, जो इंडियन जो हिंदू आर्टिस्ट थे, इंडियन आर्टिस्ट थे पहले के, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया. वहां से जो लोग आ रहे थे उन्होंने अपने आप को यहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया. सो जो अडेप्टेशन है, जो एमैल्गमेशन है, जो एक composition of a composite culture है, वो हमें सिर्फ आर्ट में ही देखने को नहीं, वो आर्किटेक्चर में ही देखने को नहीं मिलता है कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है. बट इवन व्हेन द पर्शियन वाज कमिंग इन, with these new the dance, the dancers, the new dance forms which are coming, the new the music which was coming, so the Indian artists who were previously presenting themselves in a different language now are trying to adapt to Persian. And something similar is going to happen in the 19th century, wherein once there is a development of Urdu language, we see that there is a shift from Persian to Urdu. Number of people now, Urdu becomes the important language, and that is the language in which the nobility is conversing. The nobility is kind of giving patronage to these newer people of literature who are coming. And क्योंकि ये जो class है, मैंने बात की कि इनको बहुत ज़्यादा the development of this class of painters and dancers and literary people needs some kind of a patronage, कि कोई हो जो इनको somebody who would be willing to pay them for their services, for the music that they're offering, for the for the things that they are writing, for the dance that they are presenting. Since there was a decline in the Mughal court initially, तो जो है औरंगजेब दिल्ली में रह ही नहीं रहे हैं,
he stays in Deccan and in औरंगाबाद. जो उनके subsequent जो मुगल एम्पर है वो लाहौर में रहते हैं, और उसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी डिक्लाइन होने लग जाती है. तो एक तरीके से जो पेट्रनेज इनको मिलता था उसमें एक लंबा ब्रेक आ जाता है. Right from the time period of Aurangzeb, there is a long break, and it was during this break that number of these people, they go and to other regions. They go to other regions in search of patronage. But in the 18th century, despite the fact that there is decline in the power, decline in the resource, and then another very, very important thing which is happening in the 18th century is the invasion of Nadir Shah. नादिर शाह जो है वो दिल्ली को अटैक करते हैं. सो उसमें जो है नॉट जस्ट दिल्ली इज लूटेड of its extreme riches, जो है बहुत ज्यादा जो है पैसा जो है, जो riches जो है वो दिल्ली से वो लूट के ले जाते हैं नादिर शाह. So that also happens. So मुगल एम्परर की प्रेस्टीज में नहीं, उनके पैसे में भी कमी आ रही थी. तो उसके बिना ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि ये जो कल्चर है उसका डेवलपमेंट हुआ. And remember, this is the time, also the time wherein the Europeans are coming to India, and one of the traveler who comes to India during the time period, one of the European traveler who comes to India during the time period of the Mughals was Bernier. Bernier के हिसाब से तो जो इंडियन टाउन्स हैं वो सिर्फ मिलिट्री कैंप्स थे. वो सिर्फ छावनी होती थी यहाँ पे, लश्कर होते थे. उनके हिसाब से इंडिया में कोई ऐसे कल्चरल सेंटर्स या कल्चरल टाउन्स या literary towns, ऐसा कुछ नहीं था. This is how Bernier described when he feels that India only has military towns. And yes, places like Delhi and Lahore and Agra जो थी, क्योंकि कैपिटल्स थी और imperial household यहाँ पर था, तो एक बहुत large section of army was housed in these places. बहुत बड़ा जो section है आर्मी का वो इन जगह पे होता था, और आर्मी जो थी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थी कोर्ट के साथ. जो मुगल कोर्ट है उसके साथ आर्मी का एक बहुत क्लोज एसोसिएशन होता था. बट ऐसा नहीं है कि दिल्ली का उसके अलावा कोई वजूद ही नहीं था. इट इज नॉट दैट दिल्ली हैड नो एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट it was the it was the residence of the imperial household, or it was the residence of the emperors, or it was the imperial place where the imperial household was located, or it is a center of, जो हम शहर के बारे में जब बात करते थे कि कैसे वो center of ट्रेड और कॉमर्स है. तो अब जो दिल्ली की हम बात कर रहे हैं वो ट्रेड और कॉमर्स की इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे. That is also going to happen in the later part of 18th century, also happening at this time, because the trade is important. We are also not talking in terms of, जैसे हमने जब खिलजीज की सिरी के बारे में बात की थी कि कैसे सिरी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का घर था. So Delhi has attained much more in terms of its name. वो उन सब चीजों से काफी आगे जो है वो बढ़ जाती है. वो सिर्फ एक ट्रेड का सेंटर, कॉमर्स का सेंटर या इंपीरियल हाउसहोल्ड का सेंटर नहीं है. अब it has this very rich culture of literature, a very rich culture of dancers, of painters, of people from various crafts and people who are singers. So इस तरीके का जो है डेवलपमेंट दिल्ली का देखने को मिलता है 18th सेंचुरी में. Now, a point that I raised, a question that I raised was that तो मतलब also जो बर्नियर जो कह रहे थे कि कैसे जो दिल्ली जो है वो एक लश्कर है, आर्मी का सेटलमेंट है. दिल्ली लाहौर जैसी सिटी, वो एक यूरोपियन ट्रैवलर थे जो मुगल टाइम पीरियड में आते हैं इंडिया में. एंड so Delhi was not just a center of army. It was not an army camp. It was not just a trade center. It was not just a center. It was not just a place where the imperial household was located. Delhi was much more than that, and Delhi was developing in its own identity, its own culture, and in the form of this the rise of Urdu which happens, and the rise of people who are associated with the coming of this new genre, and even the architecture, a number of जो एक reinvention मिलता है मोहम्मद शाह के टाइम के रूल के टाइम पे दिल्ली को, तो वो एक बहुत important जो है वो boost है. So this
is what Delhi is coming to now. Who are the people who are supporting? If the Mughal emperors are away for such a long time, अगर औरंगजेब जो है वो इतने टाइम तक अपने डेक्कन में है, और फिर बहादुर शाह जो है वो लाहौर में है, और उसके बाद जो है जब वो मुगल एम्परर यहाँ पे मोहम्मद शाह जहांगीर शाह आते भी हैं, मोहम्मद शाह आते भी हैं, तो उसके बाद भी मुगल डायनेस्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है. जहांगीर शाह आ जाते हैं, आई थिंक 1712 इज व्हेन ही कम्स बैक, comes to Delhi, the Mughal Emperor Jahandar Shah, and the Mohammad Shah, जिनके बारे में हम बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा रिवाइवल देखने को मिलता है दिल्ली का, और दोबारा से एक अच्छे तरीके से दिल्ली जो है वो फ्लरिश करता है एज अ सिटी इज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह जो है वो 1719 से 1748 तक, again he is ruling for a number of years, but we have to take into consideration that the power and prestige of the power, at least of the Mughal Empire, had declined drastically. There is a development of principalities, there is a development of successor states, as they are called, in various parts of India, but nobody in a way questions the authority of the Mughal emperor. So in this entire political landscape, how is it that Delhi develops? And the reason for this is the class of these people, these nobles which were housed in Delhi. So ये जो nobles की जो class है, जो aristocracy की जो class है, सिर्फ कोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहा था. Aristocracy की जो class है, with the extreme riches that they have and huge sums of money which they have, they give patronage to these newer artists and these singers and these dancers and these people from writing literature. So the patronage to these people are given by this aristocracy, the noble class which was there, the class of nobles which was there at that time. And there was almost a competition between these nobles, to house the best kind of a music concert in that sense, or how much lavish gatherings could they house, or when to which house, or to which house in the house of which noble did this most renowned courtesan presented her dance. So this is the class which is kind of giving patronage to these newer artists which are emerging in the 18th century. तो ये इस patronage जो है वो इस class से आ रहा है. और so and who are the important people? Okay, now let us talk about the important people, कि कौन से जो लोग हैं वो important हैं. पेंटिंग जो है, पेंटिंग का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, not just the development of music and literature, etc. So painting का जो कलम है, कलम is basically a term that we use for the pen. So कलम का डेवलपमेंट, पेंटिंग का डेवलपमेंट, एक बहुत ही फाइन तरीके की पेंटिंग जो है, मुगल तरीके की पेंटिंग, जिसमें पोर्ट्रेट्स जो है, ऑफिशियली सैंक्शन पोर्ट्रेट्स जो है वो बनने लगेंगे. तो वो भी इस तरीके इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि पेंटिंग का भी डेवलपमेंट होता है. And one very important painter was Churaman. तो चूरामन जो थे एक बहुत important leading painter थे, जो कि इस time पे he is the one, the most important renowned painter, leading painter of the 18th century. और जिस तरीके की paintings का development होता है कि portraits और miniature paintings जो हैं, छोटी paintings, उस तरीके का देखने को मिलता है. और दिल्ली जो है वो शिया कल्चर का एक सेंटर बन गई थी. सो इस्लाम हैज दीज टू सेक्ट्स, द शियाज एंड द सुन्नी. सो शिया कल्चर का जो है वो एक सेटअप बन गई थी. नंबर ऑफ शियाज वर देयर. नाउ देयर इज आल्सो द डेवलपमेंट ऑफ दिस म्यूजिक व्हिच इज फॉर्म, व्हिच वाज अ काइंड ऑफ a recitation which is done during the time of Muharram, जो मरसिया ख्वानी जिसे कहते हैं. मरसिया बेसिकली मींस जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके टाइम पे जो गाया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है. सो मरसिया ख्वानी जो है, इट वाज बेसिकली द काइंड ऑफ म्यूजिक व्हिच वाज प्रेजेंटेड एंड
sung during the occasion of Muharram. तो मुहर्रम का जो दिन है, जब हुसैन की शहादत को, हसन की शहादत को मनाते हैं, के लिए मनाया जाता है, इस दिन जो है वो हसन और हुसैन की जो है वो शहादत हुई थी. It is a martyrdom of these two people, which is in a way, this event represents that. So इनके लिए मरसिया गाया जाता है, the cries of the music which has sorrow attached to it. तो एक तरीके से दुख और दर्द वाला जो म्यूजिक है, इस तरीके के म्यूजिक का भी डेवलपमेंट, कव्वाली का डेवलपमेंट, सो पेंटिंग का हो रहा है, चूरामन इज इम्पोर्टेंट, कव्वाली का डेवलपमेंट, मरसिया का डेवलपमेंट, और 19th सेंचुरी तक आते आते तो है जो वो गजल का जो है, गजल का डेवलपमेंट गालिब के अंडर, दाग के अंडर बहुत ज्यादा होने लगेगा. अगर हम उर्दू की बात करें, as I was talking about Urdu, that Urdu develops to a very large extent. One very important name of this time is बेदिल. बेदिल जो है वो not really Urdu but literary culture के लिए इस समय पर बहुत ज्यादा late 17th century or early 18th century में very important name is बेदिल. And apart from that, it is when we talk about this shift from Persian to Urdu, there are important names where, like Mir Taqi Mir, and so these people who are, developing this newer culture in Delhi of this Urdu language. And what else? I think that's about it. So this is the way in which Delhi develops as the center of, the culture of Delhi develops in art, in language, in the move from Persian to Urdu, the important poets like Mir Taqi Mir, like Mirza, um, like Mirza Rafi, and the Dagh and Ghalib are definitely 19th century. So Mir Taqi Mir and Mirza Rafi etc. इस तरीके के जो नाम है वो उर्दू पोइट्री के लिए, उर्दू लिटरेरी कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पेंटिंग के लिए जो चूरामन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, इसमें मोहम्मद शाह के रूल के अंडर जो है दिल्ली का दोबारा से एक तरीके से डेवलपमेंट होता है, इसके आर्टिस्टिक डेवलपमेंट होता है, इसका कल्चरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पे होता है. I stop here. If you have any further questions, I should be willing to, and I'll try to cater to those. बच्चे, in the exam of every subject, which units, all the units will come बच्चे, कोई selective units थोड़ी आएंगे. आपका जो पेपर है उसमें जितने यूनिट हैं वो सारे आएंगे एग्जाम्स में. आपका एक पेपर होता है जिसमें कई सारे यूनिट्स में डिवाइडेड होता है वो, सो यूनिट 1, यूनिट 2. सो लाइक दिस पर्टिकुलर पेपर दैट यू हैव इज दिल्ली थ्रू द एजेस, एंड दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. एंड इट इज आपका एग्जाम टेस्ट नहीं है ये कि स्कूल टाइम का कि एक छोटे से यूनिट से हो जाएगा या इन 2 यूनिट से हो जाएगा. द एंटायर पेपर, the question paper is going to be based on the entire paper, and it is going to have questions from all, probably from all the units, or from what are the major, जो major topic है उन सभी पे questions आएंगे. तो कोई 1, 2 या 3 selected units नहीं आएंगे एग्जाम में. सारा ही पेपर का जितना सिलेबस है वो सारा ही आएगा. मैंने ग्रुप का लिंक यहाँ पे आपको सेंड कर दिया है. Anybody who wants to join the group can click the link and be a part of the group. Much SQL material is good enough, and I've told you the number of books which you can look at, refer to for this particular section. I have no information, but please, regarding the exams, you will have to get back
to SOL, and you must check Delhi University website, SOL website. The best information can be received from that end only. Any other question?